So the topic is arrays in data structure. In this video, we will learn about need of an array, definition, declaration, initialization and indexing of array. So let's start. Suppose the roll number of a student is 5. You want to store the roll number of the student. तो आप क्या करोगे, इंटीजर एक वेरिएबल बनाओगे इंटीजर टाइप का और उसमें 5 स्टोर करोगे. अब इंटीजर को कितनी मेमोरी एलोकेट होती है? 4 बाइट्स. So this is what a memory block. This is 1 byte, this is 1 byte, this is 1 byte, this is 1. So a collection of bytes. This is called memory. 4 bytes will be allocated, means 1, 2, 3 and 4. So this will be allocated. Now if you want to store a large amount of data, you want to store roll number of 60 students, then you need what? An array. So an array is what? Array is collection of data elements of same data type. Now declaration of array. Suppose you want to declare an array of roll number of 60 students. So what is the type of roll number? It is integer. So you write integer, then name of the array, suppose roll, and in the square brackets you have to write the size. Size is what? 60 and semicolon. So the syntax would be what? Data type, then name, and then size, semicolon. So this is the syntax to declare an. Now the initialization, how to initialize the array elements. So we initialize the array at the declaration time only. Suppose you have an array of 5 numbers, an array of 5 numbers. So how to initialize? Like 10, 20, 30, 40 and 50. So this is a collection of 5 integers, and this is how you have to initialize the array. Now we will see the memory allocation of an array. So let us suppose that A is an array of size 5. 1, 2, 3, 4 and 5. So array represent a continuous memory allocation. मीन्स जो एरे के जो एलिमेंट्स होंगे वो कंटिन्यूएशन में होंगे. अगर उसका फर्स्ट एलिमेंट का लोकेशन 100 है तो नेक्स्ट एलिमेंट 104, देन नेक्स्ट 108, देन अगर ये int टाइप का एरे है तो कैरेक्टर का है तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी स्टोर एट 100, देन 101, देन 102 एंड सो ऑन. सो फर्स्ट यहाँ पे जो एलिमेंट स्टोर होगा दैट इज़ ए ऑफ 0 इंडेक्स पे, तो उसका जो एड्रेस कहलाता है उसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस. एंड नाउ इसके बाद इसका कंटिन्यूस में होगा पूरा, एक मेमोरी ब्लॉक उसको मिल जाएगा. नाउ विल सी द एड्रेस कैलकुलेशन. सो अगर आपको इस ब्लॉक का एड्रेस कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमको इसके लिए देखना पड़ेगा कि इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं. इंडेक्सिंग हमेशा एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है. फर्स्ट जो एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा 0, देन 1, 2, 3 एंड 4. मीन्स अगर आपकी साइज n है एरे की तो इंडेक्सिंग विल फ्रॉम 0 to n-1. अगर यहाँ पे इसका 5 साइज है तो उसकी इंडेक्सिंग 4 तक होगी, 0 to 4. सो एड्रेस कैलकुलेशन का फॉर्मूला होगा बेस प्लस I into size. So base is the base address. Here base address is what? 100. I is what? The index. Index is what? 3. So 3 into size of integer is what? 4.
So 100 plus 3 into 4 means 12, 112. So 112 is the address of index 3. नाउ सपोज आप चाहते हो कि आप यूज़र से एंटर करवाओ एरे के एलिमेंट्स एंड देन पूरे एरे में जो एलिमेंट्स है उसको डिस्प्ले करो, तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इन द मेन फंक्शन सबसे पहले आपको एक एरे बनाना पड़ेगा एंड उसकी साइज़ आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी. डेटा टाइप वी आर टेकिंग इंट, एरे नेम वी आर टेकिंग ए एंड इट्स साइज इज़ व्हाट, सपोज 5. एंड आपको एरे एलिमेंट्स आपको एक लूप के थ्रू, फॉर लूप के थ्रू एंटर करना पड़ेंगे. तो आप एक लूप वेरिएबल भी ले लीजिए आई. नाउ प्रिंट एफ एंटर एरे एलिमेंट्स. फॉर लूप फ्रॉम आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि इंडेक्स से हमको स्टार्ट करना है. आई इज़ लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि हमारी साइज़ 4 है और इंडेक्सिंग कहाँ तक होगी, इन साइज़ हमारी 5 है तो इंडेक्सिंग कहाँ तक होगी, 4 तक. एंड आई प्लस प्लस scanf %d a of I. दिस इज़ वॉट यूज़र इनपुट लेने के लिए प्रोग्राम है. सबसे पहले i इक्वल्स टू 0, सो a 0 में फर्स्ट एलिमेंट एंटर होगा, फिर i इंक्रीमेंट, देन i इक्वल्स टू 1, सो a 1 में होगा, देन 2 के लिए, 3 के लिए एंड 4 के लिए. तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स आ गए. अब हमको इसको प्रिंट कराना है. सो प्रिंटिंग सेम फॉर लूप लगेगा फ्रॉम i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, इंक्रीमेंट करेंगे एंड प्रिंट एफ %d a of I. So this is the program to print the elements of an array and for taking the input from the user.